nation. U.S. carriers can boast up to 4 of these high-speed aluminum lifts. पूरा का पूरा हिस्सा जा रहा है नीचे। क्या सर आपको याद है कि एक बार हमने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया था? हाँ सर दिखाया तो था आपने को, वो बहुत बड़ा जहाज था, उसमें वो बहुत सारे विमान उड़ते हैं उसके ऊपर से। वो यहाँ तक ध्यान है मेरा कि अमेरिका का कहीं सबसे ज्यादा आएंगे वो। हाँ ठीक है सर, तो आज हम आपको एक ऐसा वीडियो बताने वाले हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर में डेली जो जिंदगी चलती है वो किस तरीके से चलती है और क्या क्या काम किए जाते हैं वहाँ। क्या बात है। तो सर आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। जब वो क्या करते हैं, पहली बार जो देखा था खाली ये देखा था हमने कि जहाज चढ़ते हैं और उतरते हैं, लेकिन अब उसमें काम कैसे होता है ये तो जो पहली बार देखने को मिलेगा था। तो वो हम आज देखेंगे कैसे क्या काम होता है उसके अंदर भी क्या क्या होता है। एक तरीके देखा चलती फिरती जिंदगी, ये दुनिया एक तरीके देखा है तो अंदर के क्या क्या काम होता है, कैसे क्या करते हैं, अंदर ही देखने का मौका मिलेगा हमारे आज। सर मैं तो था नहीं वो वीडियो में, सर्रू भाई और बाबू भाई थे। हाँ भाई कि मेरे को तो पहला चांस मिलेगा देखने का, जो आप बता रहे हो कि वो जहाज के ऊपर प्लेन उतरते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, पहली बार देखने को मिलेगा। Hello everyone, and welcome back to the Fluctus channel. आपका भी स्वागत है मैडम। Aircraft carriers play an important role in both offensive and defensive strategies for any nation. सही बात है भैया। Air power has always been an extremely vital part of any country's national security. इसमें तो कोई शक And नहीं these है। massive ships greatly extend the range of fighter and reconnaissance jets where land-based operations are not an option. हाँ तो भैया वही तो इसलिए तो बनाया गया है स्कूल में। क्या उड़ान भरी है। The United States currently owns 11 of these floating cities, the most of any country in the world. मतलब अमेरिका के कने 11 हैं, हद हो गई यार, ये तो बहुत ज्यादा है यार। In nearly all cases, they are some of the most versatile and technologically advanced ships in operation. तकनीक तो लगाना पड़ेगी इतने बड़े जहाज में, बहुत जरूरी है। Most aircraft carriers boast a carrying capacity of up to 90 aircraft. 90 विमान खड़ा होता है, तो वो खुद को बड़ा होना चाहिए यार, 90 विमान। Though most of them are kept on the flight deck to ensure readiness, others remain below in the hangar bay. अच्छा, नीचे वाले कंपार्टमेंट को हैंगर बेन कहते हैं। ये देखो ऐसे पार्किंग होती है। This garage-like structure is situated 2 decks under the flight deck and covers more than 2/3 the length of the ships. देखा जाए तो इसमें जरूरी है ये जहाज का हिस्सा भी देखा जाए तो। सही। Aside from planes themselves, the 3-deck high hangar holds spare parts, fuel tanks, and a variety of other important equipment. मतलब सारा जरूरत का सामान यहाँ पे रखे रहता है। There are also multiple compartments on the sides of the hangar where parts can be stored and worked on without interfering with other activities. मतलब उनका मैनेजर उन्होंने बहुत प्यारा करके रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, बहुत बढ़िया। Aircraft carrier flight crews need to minimize the chances of even the smallest debris finding its way onto the deck. That's why all training and maintenance work takes place in the hangar. अच्छा, तो ट्रेनिंग भी यही होती है इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जगह बहुत होगी यहाँ पे क्या? हाँ, ट्रेनिंग हो या मरम्मत, सारा काम यही हो रहा है। This also helps with aircraft inventory and organization, as planes can be more readily moved fore and aft, where there are few people to move around. सर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो सिपाही हैं 24 घंटे ही यहीं लगे रहते होंगे, क्योंकि इनकी 24 घंटे की। To the stern of the ship, the hangar also features an engine testing area. ओह बात है यार।
This is where crews can make sure engines are working as intended before a plane goes up in the air. ये तो बहुत जरूरी है यार. During the engine testing process, the entire engine is removed from the plane and set up in a special blast area. अरे भैया इसका इंजन कितना भारी रहता होगा यार. Here, cells are inspected and repaired as needed, then put back into the engine so the entire unit can be tested. इस काम में पूरा दिन लगेगा वो भी है. If everything is in proper working order, individual squadrons are notified of their engine's performance ratings. ये बहुत अच्छी बात है भी. Amongst the most important component of the hangar bay design is the elevators. वाकई में बहुत बड़ी लिफ्ट है यार. देखो कैसी नीचे जा रही है यार. हाँ यार, देख लो यार. Depending on the configuration, U.S. carriers can boast up to 4 of these high-speed aluminum lifts. ओह चार. बाप रे बाप है वो बात है वो यार. चला गया पूरा का पूरा हिस्सा जा रहा है और नीचे. ये चीज किसी चमत्कार से Thanks कम to their नहीं होता. state-of-the-art hydraulics, they can generally lift 2 100,000-pound fighter jets at once, as well as thousands of pounds of other equipment. मजा. अरे भैया कब होते हैं. They are generally built around the outside of the ship, serving as part of the overall deck when not being lowered and raised. इंजीनियरों ने बहुत दिमाग लगाया इसलिए उन्होंने बाहर की तरफ बनाया इसको क्या. There are multiple other सही बात है smaller भैया. elevators as well. अच्छा छोटी These are लिफ्ट भी है designed नहीं. to carry छोटी weapons लिफ्ट भी from है. the ship's magazine to the flight deck, where they can be Yeah. loaded onto the aircraft. बात है यार. अच्छा. These elevators are typically located behind the launch area in order to ensure देख लो planes ना can भैया be मिसाइल armed जा and रही है in the उसमें air सिर्फ as फिट fast होगी as प्लेन possible. में. देखो The logistics of an aircraft carrier can be very complex to grasp. However, this extends far beyond the military capacities and capabilities of these vessels. एक काम को पहले तो करना पड़ गया यार. जब तक For instance, with up to 3,000 personnel aboard the ship at once, feeding the crew 3 square meals a day is an undertaking in its own right. लोग देखो 3,000 लोग रहते हैं. उनका खाना पीना डेली रोज सुबह शाम ही पे होता है. इतना बड़ा काम. मैं भी वही देख रहा हूँ भैया. मैं भी वही देख रहा हूँ. However, it's worth noting that mealtime is no longer only a massive cafeteria affair. अच्छा 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 अच्छा. आते यार. There are also multiple galleys making everything from चीज़ का spare ध्यान ribs रखना to होगा. soup to cookies and cakes around the clock. उन्हें अच्छा खाना बहुत देना जरूरी है क्या. अच्छा खाना मिलेगा जब भी तो अच्छा काम करेंगे वो. पहली बात है. The mammoth vessels are often referred to as floating cities, with thousands of its residents working around the clock इसमें to कोई make sure शक the नहीं है vessel कि ये stays तैरता हुआ एक afloat. शहर है भैया. सही बात. Most civilians are shocked to learn about all the various facilities on these ships, many of which aren't very different from what they would find on land, including Starbucks. लो भैया काफे की दुकान में अंदर ही है. तैयार. Benefiting sailors by giving them the hometown feeling, I यही guess. बात है भैया. Starbucks you usually don't find on ships, especially warships. अबे Most किराने की carriers दुकान feature भी है a क्या general अंदर. store, a laundry, a dry cleaner वाह and यार, uniform shop, किराने की दुकान a भी barber अंदर. shop, and a post office. हमारे बच्चे क्या बात है. वाह. There is also a sick bay Very offering good. emergency services, a dental clinic, and in-house labs for checking test results. ये सबसे जरूरी काम है भैया. हाँ भैया. Since carriers spend up to 9 months away from home port, it's Oh, crucial no that they do their महीने. best to provide anything the crew and officers might need or desire. बिल्कुल सही बात है भैया.
One of the reasons for all this self-sufficiency is morale. Navies around the world know that both operational missions and regular patrols can be very stressful. सही बात है यार, तनाव में तो रहते होंगे यार। This has led to the development of some unique rituals and customs over the years. One of the most notable is what's known as the line crossing ceremony. वही बस्ती बहुत जरूरी भी है, ऐसा मत समझो है। हाँ, सही बात। This takes place whenever new crew members are set to cross the equator for the first time. अच्छा। यह बहुत जरूरी है। The rules vary from ship to ship, Yeah. but are always something of a seaboard ritual, managed by the crew leaders, which typically includes costumes, plays, and diverse fun regalia. ये सब इसलिए जरूरी है कि इससे उनका तनाव कम होता है। हाँ। इसलिए जरूरी है। Another interesting ritual is what's known as a swim call. This is when sailors are allowed to explore uncharted waters by jumping into the ocean for a nice long swim. बहुत बढ़िया उस्ताद है। Officers will often encourage sailors to jump from different heights to prove their mettle to their peers, with extra points for cannonballs इसमें and कंपटीशन होना भी है, नहीं है? ओ मैडम भाई। अबे एक और नहीं छलांग मार रहा है। In the end, everyone gets a जरूरी है, nice बाबू break भैया। from work and boosts camaraderie amongst the sailors. That's the end of this video. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss any of our new content. See you next time. देखा जाए तो एक तरह से ये तिलता वाला शहर जो है वाकई में देखने में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो जितने भी काम है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हॉस्पिटल यहाँ पे, होटल यहाँ पे, और हर चीज़ की चीज़ कोई चीज़ की जरूरत हो जो मैकेनिक यहाँ पे, यानी पूरी तैयारी के साथ है। ये जो इन्होंने बना वाकई देख कर बहुत अच्छा लगा। बाकी कितनी मेहनत लगती होगी इनको यहाँ पे। ये इतने बड़े बड़े जहाज है नहीं, महीनों महीनों समंदर में पड़े रहते हैं, इसलिए इनको हर चीज की सुविधा होना जरूरी, नहीं तो अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो कहाँ भागेंगे ये लोग। सर मैंने तो ये चीज ही पहली बार देखी है, क्योंकि 90 जहाज खड़ो हो रहा है, वो वहीं से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और लड़ने जा रहा है और वापिस आ रहा है और उनको नीचे भेज रहा है रिपेयर के लिए। हाँ बहुत बड़ी बात है। वो पूरी का पूरी लिफ्ट नीचे चली गई यार। बाबू भाई तुम बजाओ और फौज के ऊपर मैं गाना गाता हूँ, अब सुनो ये। बिल्कुल सुना। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, ये तुझ बिन घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें